So Guru Maharaj is such a great personality. So Guru Maharaj talks the same things, same messages, same words. Everything is same, but it's so there are no words to explain that. पता नहीं क्या चीज़ है कि लोग मोहित हो जाते हैं. We cannot explain in words what attracts everyone that they come to Guru Maharaj very easily. जैसे आज भीमा प्रभु बोले थे कि महामन प्रभु बोले थे ना कि आप क्या चमत्कार किए, क्या जादू दिखा सकते हैं प्रभुपाद. Today in the lecture, Bhima Maharaj or some other Maharaj mentioned, ठीक है, I said that what magic you do that everyone comes to you. तो उसी तरह से गुरु महाराज के जो मैजिक हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि कितने सारे ऐसे ऐसे भक्त की हमारी दृष्टि से इसका क्या होगा, ये थोड़ी ना, मतलब क्यों इतना इसको टाइम दे रहे हैं. भाई कोई हमारी दृष्टि में ऐसे लगते है कि ये तो भक्त बनने का वो है ही नहीं इसका, तो या फिर ऐसे जस्ट वेल विशर टाइप का ही है. लेकिन वो लोग बदल के भक्त बन गए, अभी संग पा गए. So as we have some limited senses, so we don't able to see कि he's a good devotee or not. But Guru Maharaj and other Vaishnavas can see. So Guru Maharaj can see, and he gives equal amount of time to every individual, so he can come to that position. We can't see that much, but Guru Maharaj sees. So that's the beauty of Guru Maharaj. बदल गए अभी तो देख के वो गुरु महाराज के जो मिरेकल देखने को मिलते हैं, चेंज हो रहे. So we can get to see Guru Maharaj such kind चमत्कार. of miracles, like that devotee who was not interested in initiation, but now he is looking for initiation. This is just a small example. और एक इंसिडेंट और, जैसे कैसे जीवे दया या क्या दृष्टि है गुरु महाराज की दूसरे जीवों के प्रति. राजस्थान में की बात है. अच्छा, थोड़ा सा इजी हो जाता है एक्सप्लेन करना. So the way Guru Maharaj, the special vision that Guru Maharaj has to each and every individual, so he can know what to do and what not to do. So for the vision that we don't have and other our Guru Maharaj and other Vaishnavas, so there is some incident he is going to share with us. तो जैसे कि सब जानते हैं गुरु महाराज सुबह और शाम वॉक पे जाते हैं. Everyone knows that Guru Maharaj goes for walk morning and evening daily. तो वहाँ खेतों में चींटियाँ बहुत होती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा एरिया में वाइड उनका लाइन होती है. So when Guru Maharaj go to a walk in the field, so there are so many ants who's going from one place to another. So they have large numbers. They're covering large area, large breadth and length in the. So they have so many going on at the same time. तो हम जा रहे थे, मेरा गांव से है बैकग्राउंड, तो हमको अनुभव है कि मिट्टी में अगर चिट्टी के ऊपर पैर भी रखा जाता है वो मरती नहीं है. So Prabhu is also comes from a village background, so he knows. So when we put foot on ants pieces on the mud, he will not die. The ants don't die, so he knows very well. So he was going through with Guru Maharaj in that direction. तो चिट्टियाँ हैं तो जनरली गुरु महाराज बोले चिट्टी है तो साइड से निकलते हैं. वो बहुत वाइड एरिया था, जंप भी नहीं कर सकते, साइड में भी कोई जगह नहीं थी कि कहीं से जा सकें. तो मैं बोला गुरु महाराज ये मरती नहीं है मिट्टी में, और मैंने पैर भी यूँ रख के दिखा दिया, मरती नहीं है. पैर रखा उसमें हटा लिया तो उठ के, उसका कोई ज़्यादा नहीं, बस पैर रखा हटाया तो चल दी, फिर से कुछ होता नहीं. So Guru Maharaj said we should not get any reason. So said that we should change our route. We should cross. ठीक है, कोई नहीं, उसको जैसा समझ में आता है. तो कितने इंग्लिश दो फिर से एक बार हो गया. Means many times Guru Maharaj go pass through, then if there is some ant or any insect, then he either change the way or either jump. So no way to pass. And then I show to Guru Maharaj also that they didn't die. Then Guru Maharaj says, मैं इंग्लिश ही बोलने का प्रयास करता हूँ, टूटा फूटा क्षमा कीजिए.
Then Guru Maharaj says, how can I put my leg on the, this is a temple of Lord. Each and every living entity, there is Lord residing in his heart. How can I put my leg on it? तो ये उनका भावना है, कैसे मैं पैर रखूं, भगवान का मंदिर है ये, इसका शरीर में कैसे इसके ऊपर पैर रखूं। और बहुत सारा एक से रिलेटेड याद आता जा रहा है, पता नहीं और कोई बोलना चाहता है, कहीं बोले टेक ओवर कर लिया पूरा ही। ऐसे ही एक उधर गुरु महाराज का पहली बार रूम बनाए थे हम, तो राजस्थान जो श्री रामपुर जहाँ रह रहे। One more incident coming from the Mangbri. So when they have made a room for Guru Maharaj in Bassi na, Bassi. अभी गए थे जैसे कार्तिक में साधु संगा था, जब वहाँ पे ही ऊपर गुरुकुल के बच्चे रहते हैं, अभी ऊपर वो रूम बना था। तो गुरु महाराज आए उधर 2015 साधु संघ में। So it was 2015 साधु संघ। गुरु महाराज केम इन दैट विलेज, और वहाँ एक ऊँट था। जैसे so there was a camel over there. तो जैसे गुरु महाराज जितनी बार भी देखोगे बात करेंगे तो बोलेंगे उधर मगरमच्छ होता या भालू आ जाएगा, भालू है। तो ऐसे ही जब भी देखेंगे उस ऊँट के बारे में कुछ बात करेंगे। अच्छा, so Guru Maharaj is having, whenever he goes somewhere he say, okay, is there bear, is there any other animal? So when he was there in Bassi, so he start talking about camel. दैट एक ऊँट था उधर, उसके बारे में कई बार बात करेंगे। So he start talking about him. तो वहाँ गुरु महाराज बहुत एकदम फ्रीली रहते हैं और सिंपल रहते हैं पूरा। आचार्य जैसे नहीं, कभी ग्रे हो गए या फिर कभी आचार्य मूड में नहीं देखता हूँ गुरु महाराज को कभी भी। वहाँ एकदम फादरली रहते हैं। In Bassi, Guru Maharaj is not in the mood of a Guru, is like more of a father, very relaxed, simple, not too much angry also. तो सुबह शाम जब जाते थे तब तो जाते ही थे, तब तो देखते थे, दिन में भी दोपहर को, क्योंकि फ्री टाइम है, ज़्यादा कुछ पुराना बिजी नहीं है, तो बोलते थे ए ऊँट क्या कर रहा है, चलो देख के आएंगे। So morning and evening definitely we are able to see Guru Maharaj, but most of we are free there. So whenever we got chance, Guru Maharaj said, okay, let's go and see what camel is doing. तो अच्छा, एक दिन जहाँ गुरु महाराज का रूम है उसके पीछे ही कुछ मिट्टी या फिर एक वो खाद, गोबर का खाद उठाने के लिए उस ऊँट का काम ले रहे थे, भर भर के खेतों में डाल रहे थे। उनको यूज कर रहे थे। हाँ, ऊँट गाड़ी से। अच्छा, so where the Guru Maharaj room, so back side of that Guru Maharaj, so there was a cow dung, and local people using the camel to transfer that cow dung to the field. तो गुरु महाराज जाके और उस ऊँट के पास चले गए। So Guru Maharaj went to that camel. हम भी साथ में घूमते हुए उस ऊँट के पास ही चले गए। ऊँट क्या कर रहा बेटा? So we also went to there, and Guru Maharaj said, Oh camel, camel, what are you doing? Son, what are you doing? Camel, my son, हाँ। My son, what are you doing? अच्छा, उसको फिर कुछ गुरु महाराज जैसे गायों को कुछ खिलाते हैं, हाँ। तो कुछ खिलाने के लिए चाहे तो वहाँ नीम था एक, हाँ। तो मैं अपने पत्ते तोड़ के गुरु महाराज को देता गया, गुरु महाराज खिला रहे हैं। So Guru Maharaj generally feeds anything that cows. सब जीवों को ही देते हैं। So similarly, Guru Maharaj tried to feed something camel. So Prabhu was there was a नीम ट्री। neem tree. I don't know. Neem को क्या बोलते हैं? नीमी बोलते हैं। So Prabhu was breaking the neem from neem tree and giving to Guru Maharaj, and Guru Maharaj eating that. तो अच्छा, नीम खाता, ये तो कड़वा खाना पसंद करता है, तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी बनेगा बेटा, वृंदावन जाएगा, तेरे लिए आश्रम बना देंगे। और अगर तुमको शादी करना है तो अप्सरा भी ढूंढ देंगे तेरे लिए, ऊँट नहीं अप्सरा। Neem is little bitter. So Guru Maharaj said, right, son,
You want to, you like bitter? You want to become brahmacharya? You want to become brahmacharya? Let's go to Vrindavan. We will make ashram for you also. And if you want to marry, we will find an angel too also. तो इसी तरह, हाँ, इसी तरह से कई सारे इंसिडेंट है। हाँ, उसको नाम भी दिए गुरु महाराज, उसको नाम दिए रामभज। So similarly, there are so many incidents, and he gave them camel a name Rambhaj. That camel. रामभज क्या कर रहा है बेटा, और क्या क्या खा रहा है? वो खा रहा है वो, क्योंकि ऊँट जनरली लगा रहता है, बैठे बैठे भी बैठा रहेगा और उसका वो तो बीच में बैठता है, किस कर बैठ जाएगा पता नहीं, तो खाता रहता है। तो क्या क्या खा रहा है? Son, what are you eating? So generally somebody say, Rambhaj, what are you eating? अच्छा, उसकी आंखें जो है मोटी मोटी होती हैं ऊँट की, तो देखो इसकी इसकी देखो बिग आई लाइक, वो बोले कि गुरु बोले इसका आईज लाइक ए बॉल, कौन सी बास्केटबॉल या होता है ना, गोल्फ बॉल लाइक, और बोले डीप आंखें है ये, क्या क्यों, क्या कि सोच रहा है, जैसे कुछ सोच रहा, कितनी दूर है कैलकुलेट कर रहा है हमको, या फिर सोच रहा है कुछ, मेडिटेट कर रहा है, कुछ योगी है, ऐसे कुछ बातें करते रहते थे। So camel has some big eye, size of a golf ball. So and it's deep also. So Guru Maharaj, कुछ think, you are thinking something, you are calculating the distance, something like that. तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि गुरु महाराज इतना क्यों कृपा कर रहे हैं, इसका क्या इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे इतना, बच्चे जैसे ना, कि जैसे ऊँट ना देखा हो या फिर क्या है ये। तो बाद में मैं उसको पता चला कि गुरु महाराज के लिए जो रूम बना था, उसके लिए जितनी भी ईंटें, मिट्टी, बजरी उस ऊँट ने ढोई थी। तो कोई साधु की थोड़ी सी सेवा करता है, कैसे उसका उद्धार करते हैं, वो चीज़ देखने को मिली। तो उसका बैकग्राउंड जो पता चला कि उसने सब ढोया था वो रूम बनाने के लिए, तो गुरु महाराज का कुछ सेवा किया, तो उसका उद्धार करने के लिए गुरु महाराज बार बार उसको दर्शन दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसके पास उसको जस्ट टू डिलीवर हिम नाम भी दिया। और मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि वो जाएगा तो वो भक्त बन के तो आएगा ही, साधु का दर्शन किया। So he was thinking why Guru Maharaj is giving so much time to that camel itself. So later on he get to know, so the room which was built for Guru Maharaj, so the material which was transferred from one place to that place was loaded by that camel itself. So that's why Guru Maharaj is giving so much time to him, talking to him, and giving a name. So he thinks that definitely he got Guru Maharaj's mercy and will come as a devotee to this universe. So that's why he is giving so much time to that camel. So Guru Maharaj reciprocate to everyone the way everyone reciprocates. So yes, the camel has served sadhu. So sadhu has reciprocated in this way. तो कैसे देवी प्रकृति में आश्रित होते हैं, इसका और एक इंसिडेंट याद आ रहा है। साधु संघ हरिद्वार 2014, तो उस समय 1 नंबर घाट पे गुरु महाराज डेली जाते थे स्नान करने, और उधर ही थोड़ा वॉक भी करते थे। तो गुरु महाराज बात कर रहे थे, मैं था, अभिराम प्रभु आए और असीम प्रभु थे, तो वॉक करते करते बात कर रहे हैं। तो मैं जब नया ही था, कोई 2-3 साल हुए होंगे, तो मुझे डाउट आया, वो जैसे डाउट क्या, मैं देखा उधर कुछ चींटियाँ थी, कोई एक आध चींटी थी, बड़े होते ना जैसे चींटे, जैसे काले काले, तो घूम रहे थे कोई कोई। तो गुरु महाराज बातों में पूरा निमग्न थे, इंस्ट्रक्ट करते हुए, कथा बोलते हुए, और मैं संदेह हुआ कि वो गुरु महाराज के पैरों के पास से ही घूम रहे हो। तो मुझे लगा अच्छा लंबा हो जाएगा, फिर बोल। So another incident is coming from 2014, Haridwar. So Guru Maharaj goes for daily bath in Ghat number 1. So he was with Guru Maharaj, Abhiram Prabhu was also there, and Asim Prabhu was also there. So they were talking and Guru Maharaj was instructing something else. So he observed one thing, that so there are ants, there are different varieties of ants. So there is one type of ant which is big black color ant. So he was roaming around Guru Maharaj's foot. So he just observed and start thinking of it. तो गुरु महाराज बातें करते करते जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पूरा निमग्न है बोलने में कुछ कुछ। तो मैं देखा कि ये चींटियाँ पैर के नीचे आएंगी, कि ध्यान है नहीं,
तो देखता हूँ कैसे वो होगा। तो कई बार वो चिट्ठी से पैर गुरु महाराज का इधर पड़े, कभी इधर पड़े, कभी इधर रह जाए, कभी उधर रह जाए, कभी उस पर पैर नहीं पड़ा। So he observed these things, so he think that it might that Guru Maharaj's foot will come up on that ant. So he was observing very keenly, but it was never happened. The ant is there, the foot is there. If ant is there, the foot is there. So it was never ever close to that ant. तो एक बार क्या हुआ कि ऊपर ही पैर आ गया गुरु महाराज का, वो चिट्ठी गुरु महाराज के पैर के नीचे आ गई। So once the Guru Maharaj step over the ant. तो मैं सोचा हाँ इस बात हो गई है। और वो सुना था ना कि कैसे देवी प्रकृति में आश्रित होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता, देवी प्रकृति उनकी रक्षा करती है ना। तो जो ही गुरु महाराज पैर उठाए तो देखा एंड तो ओके एकदम। और कहाँ क्या हुआ, गुरु महाराज का चप्पल जरूर हुआ लेकिन नीचे इस शेप में डिजाइन था, चप्पल के नीचे नहीं था डिजाइन, तो उसके बीच में चींटी आके रहेगी। Devi Prakriti Ashray is the example. So he thought that it has died. But when Guru Maharaj took off his foot, so the ant was alive. So when he observed, so the lower part of the foot was in a curve form. So he was there. So he was in between gap. In between those gaps. जैसे कई बार इंसिडेंट बताते हैं ना कि यू में स्लीप, प्रभुपाद का बताते हैं गुरु महाराज, आई कैन नॉट। तो उसी तरह से गुरु महाराज चाहे मैं ध्यान दूँ या नहीं दूँ, यू में स्लीप आई एम नॉट। तो इसी तरह गुरु महाराज का चाहे ध्यान है नहीं है तो कभी भी उनसे पाप होता नहीं। मैं ऐसा फील किया वो चीज़ें। As Prabhupada also said, I will not sleep, you may sleep. So similarly, Guru Maharaj is there, that he intentionally, non-intentionally cannot do any kind of sin. उसी टाइम की एक और घटना, एक कीड़ा वो तड़प रहा था, पूरा एकदम बहुत जैसे तड़प रहा था। So same incident from the same day. So there is an ant which was craving a lot, craving. तो सफरिंग। तो असीम प्रभु जिज्ञासा किए गुरु महाराज, अब ये ऐसी स्थिति में है, क्या करना चाहिए, ये बहुत तड़प रहा है, क्या इसको वही इतना दर्द से क्या इसको मार देना चाहिए कि भाई दर्द से इसको रिलीफ मिल जाए। So Asim Prabhu was there also, so he was very inquisitive about it. So he asked Guru Maharaj, what should we do? The ant is so much, the ant is suffering a lot, so whether we should kill it or not. तो इधर बहुत सीखने का है। हम जनरली यही रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल डेथ, कि उसको इंजेक्शन दे दो जहर का, आराम से मर जाए, वो दर्द फील ना करे और मर जाए। तो हम क्या सोचेंगे, क्या मार देना चाहिए? जनरली सोचते, यस बोल रहे हैं, हाँ जनरली यस, हाँ हाँ हाँ। क्या करना चाहिए? भाई सब बोले मार दो, गुरु महाराज क्या बोले? अच्छा आप ट्रांसलेट कर रहे हैं माता जी। गुरु महाराज क्या बोले कि नहीं, अगर इसको भी आप मार दोगे तो उसका हम सफरिंग और बढ़ा रहे हैं। कैसे? उसके कर्म के अनुसार उसको कर्म भोगना पड़ रहा है, तो वो उसको भोग रहा है, वो सफरिंग झेल रहा है अभी। इफ़ यू किल हिम नाउ तो दोबारा उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इस कंडीशन में आना पड़ेगा, और जितनी सफरिंग जो झेलनी थी वो फिर झेलनी पड़ेगी। तो हमने उसका लाइफ टाइम मोर प्रोलॉन्ग कर दिया। एक्चुअली वी आर प्रोलॉन्गिंग हिज लाइफ टाइम मोर बिकॉज ही मस्ट गेट दैट हिज कर्मा ऑफ हिज द फ्रूट ऑफ हिज कर्मा। तो कैन नॉट डाई। जस्ट आप उसको क्या कर सकते हो बताए कि थोड़ा आप हरिनाम कर सकते हो, या फिर उसको कुछ गंगा जल या चरणामृत कुछ दे सकते हो, या कुछ भी ऐसा प्रयास कर सकते हो। नेवर डाई, नेवर किल हिम। हो ही गया मेरे ख्याल, हिंदी इंग्लिश दोनों ही होगी ना? इंग्लिश माता जी का ठीक है। और भी एक इंसिडेंट होता है गांव में, अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो रेबीज हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी का। उसका भी सेम यही चीज़ होगी, उसको तो मार देते हैं फिर, क्योंकि थोड़ी टाइम बाद मरेगा वो, उसको इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। जो मरेगा तो जीव भी, लेकिन उसका कर्म का फल है ना। हाँ। क्यों वो पर्टिकुलर व्यक्ति
को कुत्ते ने काटा, हाँ, क्यों उसको वही पागल हुआ, तो उस कर्म का फल है, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना। ये गुरु महाराज का जो बताया होता है। इंसिडेंट तो और भी आ रहा है, कोई और शेयर करना चाहता है तो बता दीजिए। सुरभि माता जी can say. She is the most senior. गुरु महाराज के जीवन के बारे में बता सकते हैं? जानते गुरु महाराज की जीवनी जो जो अभी भक्तों से सुना, जैसे कुछ कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें जो पता चल रही हैं, जर्नली तो सब ने ही पढ़ा है, गुरु महाराज की बुक में भी लिखा है गुरु महाराज बोन। जैसे आज एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला जब महामन प्रभु बोले कि ही इज़ वेरी स्कॉलरली। हाँ, हमारे सामने गुरु महाराज स्कॉलरली कहाँ दिखाते हैं। इवन कई बार डाउट होता था मीन्स कि गुरु महाराज, मैं सोचता था ऐसा क्यों करते हैं, आधा श्लोक बोलेंगे या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर वो क्या 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 बोलते हैं, दूसरों से श्लोक पूछ रहे हैं। तो क्या ऐसे ही संदेह एक बार आनंद में प्रभु को सब जानते हैं शायद, तो अभी तो चले गए प्रभु, तो हम थे पंजाब में, वहाँ उन्होंने शेयर किया ये कि वो भी एक बार पुरी में थे, तो प्रभु को भी ऐसे ही संदेह हुआ मन में कि शायद गुरु महाराज इतना ज़्यादा वो, मतलब थोड़ा संदेह हुआ। तो वॉक पे जा रहे थे समुद्र पे, वहाँ पे एक साधु मिले, एक दूसरे से हरे कृष्णा या मिलना हुआ, बातचीत शुरू हुई। तो वो निराकार के उपासक थे, तो बातें शुरू होते होते वो एक श्लोक कोट कर रहे हैं, फिर गुरु महाराज एक श्लोक कोट कर रहे हैं, फिर वो कहीं से बातें कर कोट कर रहे हैं, गुरु महाराज कोट कर रहे हैं, विभिन्न श्लोक अन्य अन्य कितने सारे ग्रंथों से, और ऐसे ऐसे श्लोक कोट करते जा रहे हैं। बहुत देर तक चलती रही डिबेट, तब जाके उनको वो तो एकदम क्या हो गया, पानी तो पूरा एकदम एम्ब्रेस हो गए, आनंद में प्रभु एकदम पूरा, ये क्या मैं किया। तो जो रूम पे गए वापसी, तब क्षमा मांगे गुरु महाराज, मैं आपके चरण में अपराध किया मन से, मैं ऐसे ऐसे सोचा कि आप पता नहीं ज़्यादा जानते नहीं हैं क्या शास्त्र। तब गुरु महाराज बोले जानता तो हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑडियंस मैं क्या दूँ। तो गुरु महाराज जैसे वो बोले कि बहुत स्कॉलरली हैं, बहुत हम्बल हैं, और प्रभुपाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत संग दिए हैं, पर्सनल संग पाए हैं। गुरु महाराज बोलते भी हैं, वी आर पर्सनली ट्रेंड बाय प्रभुपाद, सो दैट आई एम टेलिंग यू इफ़ यू फील मी एज यूर वेल विशर, ऐसे कई बार बोलते हैं गुरु महाराज। तो और इंस्ट्रक्शन भी पर्सनली पाए हैं। वह बताते कई कई चीज़ें, तो कि मुझे प्रभुपाद कंबल दिए थे, एक गोल्डन पेन था, टाइपराइटर था, लेटर थे, कुछ पर्सनल रिकॉर्डिंग थी, तो वो मिसप्लेस होगी किसी तरह से। तो गुरु महाराज वास्तव में बहुत मतलब इंटेलिजेंट ही नहीं, हाईली इंटेलिजेंट है। अभी लेटेस्ट ही राजस्थान में आए, तो कुछ बात चल रही थी, तो मैं बोले, गुरु महाराज बोले अरे तुम बताता नहीं। गुरु महाराज बताया तो था आपको। तो गुरु महाराज बोले आपने मुझे बताया और मैं भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु महाराज की अपनी भाषा नहीं थी, आपने मुझे बताया और हम भूल जाएगा, ऐसा होने नहीं सकता। तो गुरु महाराज भूलते नहीं है। कई बार बोलेंगे, जानबूझ के ऐसा करते हैं कि 2 साल 3 साल पुराना हो जाएगा, ये लड़का कहाँ से, व्हाट इज नेम, नहीं पता है, सब कुछ है। तो वो पता नहीं अपनी क्या लीला है गुरु महाराज की, मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सुना। तो पुराने जो भक्त हैं, मैं सोच रहा था कि उनसे जो गुरु महाराज 34 ईयर बिताए हैं मायापुर में, तो हमको कुछ नहीं पता। प्रभु भी एक बार चर्चा कर रहे थे, और तो उनसे जान के हमको जानना चाहिए कि गुरु महाराज क्या क्या किए, कितना स्ट्रगल किए हैं। तो एक प्रभु जी हैं, अभी तो ब्रज में रहते हैं, हरि प्रेम प्रभु। वो एक बार बताए थे कि जैसे आज बताया ना कि महाराज एक ट्रस्टी भी हैं, जब तक हम महाराज जी का वो पढ़ रहे थे,
तो वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ BISTC, वो क्या है ना, एक वो है फाउंडेशन है जिससे कि गौर पार्षदों के गौरांग महाप्रभु की लीला जहाँ जहाँ है उनको डेवलप करने का एक ट्रस्ट है इसको उनका। तो बोले उसमें मैं गुरु महाराज के साथ सेवा किए 15 साल प्रभु जी। तो बोले महाराज मेरे इंचार्ज थे। असल में गुरु महाराज को हम ही गुरु महाराज नहीं बोलते, बहुत सारे ऐसे पुराने भक्त हैं, अन्य प्रभुपाद के शिष्यों के, अन्य महाराजों के शिष्य हैं, लेकिन वो बोलते भी हैं ओपनली कि आज अगर मैं हूँ अभी तक तो बिकॉज ऑफ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने हमको बहुत शिक्षा दिया, प्रेम दिया और उन्होंने बचाया हमको इस जीवन में। अभी तक ब्रह्मचारी हैं तो अभी, जैसे आज भक्ति प्रेम महाराज जी बोले थे कि आपने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी और सेवा का मौका भी दिया और आज मैं आपकी वजह से हूँ, ऐसा बोले अभी तक भी। तो बहुत कुछ बोलने को है लेकिन टाइम शॉर्ट। तो प्रभु जी बोले कि गुरु महाराज ने कभी भी मुझे ऑर्डर नहीं किया, रिक्वेस्ट करते थे कि हम उधर जा रहे हैं, क्या आप थोड़ा चल पाएंगे। बोले मेरे इंचार्ज हैं लेकिन कभी आदेश नहीं दिया। तो गुरु महाराज का ये स्वाभाविक नेचर है। और अभी भी कोई बता रहा था कि पिसीमा बोलते बुआ को, अब नॉर्थ वाले हैं ना, तो बुआ को बंगला में पिसीमा बोलते हैं। तो गुरु महाराज की बहन वो आई हुई हैं, इधर ही है, तो उनसे भक्त लोग गुरु महाराज का पास्ट लाइफ जान रहे थे जब वो घर में थे। तो एक इंसिडेंट कोई बताए कि आप बहन भाई थे तो आपस में झगड़ा करते हैं, छोटे बहन भाई तो क्या गुरु महाराज आपसे कभी झगड़ा किए नहीं, कभी आप मार पिटाई हुई नहीं आपस में। तो माता पिसीमा बता रही थी कि ये मेरे साथ मजाक करते थे, मुझे हमेशा हंसाएंगे, लेकिन कभी मेरा भाई ऐसा नहीं था कि झगड़ा करे या मारपीट हो। तो गुरु महाराज का स्वाभाविक स्वभाव है ये, नेचर बाय नेचर गुरु महाराज जैसे हैं कि कोई को इवन बात भी करते हैं तो इतना कैलकुलेट करके, बहुत सोच समझ के और सेंसिटिव वे में बात करते हैं कि किसी को कुछ हर्ट ना हो जाए, थोड़ा सा भी इतना फील करते हैं। आगे पीछे से अपना मूड शेयर करेंगे, जैसे जब कोई साथ रहता है, इसलिए मैं जो अभी साथ है उनसे पूछता हूँ कि यार प्रभु कुछ बोले हैं क्या, कुछ बोले मेरे बारे में। क्योंकि जब कोई इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट बताता हूँ कैसे हम मर्यादा, हम जैसे जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, डिसाइपल हैं, तो उनको किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं उसके लिए सिखा रहे हैं। एक महाराज अभी तो चले गए, गुरु महाराज के गुरु भाई के शिष्य थे, सन्यासी बन गए थे। तो मंदिर में तुलसी आरती हुई, परिक्रमा करके जल दे रहे थे। तो गुरु महाराज जल देने गए उधर, तो महाराज भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा होगा हाउ आर यू महाराज, क्योंकि वो भी सन्यासी बने। तो उधर तो कुछ नहीं, गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते, ऐसे उसको फील भी नहीं होने देते बाहर, तो पता भी नहीं चले देते बहुतों को। जब रूम में आए तो गुरु महाराज बहुत गुस्सा प्रकट कर रहे हैं कि जानते नहीं हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए, हाँ, किस तरह से आचार व्यवहार करना चाहिए। वो मेरे गुरु भाई का चेला है, चाचा जैसे है, और संन्यास ले लिया या दंड ले लिया तो इसका मतलब थोड़ी इक्वल हो गए। तो सिखा रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना है। तो पर्सनली ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे भारतीय हैं, कई वाले बोलते हैं अभी तो 16 राउंड इज नथिंग फॉर इंडियन, हाँ, ये फॉर बाहर वालों के लिए 64 राउंड करना चाहिए। ऐसे तो कई सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत कुछ जैसे ट्रेनिंग देते हैं। तो पर्सनल चीज़ें कई बार गुस्सा कर देंगे या रोष प्रकट करेंगे या बताएंगे सिखाने के लिए, लेकिन बाहर में कभी भी ऐसा व्यवहार देखा नहीं, इसलिए कई बार आश्चर्य होता था। हर कोई यही बोला गुरु महाराज बहुत विनम्र हैं, लेकिन जब शिष्य के पास किसी के ऊपर जिसको थोड़ा अधिकार देता है तो उसके ऊपर गुरु महाराज बिकम सो हैवी कि कांप जाएगा, रोने लग जाएगा, हैवी होते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं कि उधर कर्तव्य है सिखाने के लिए, ये मैं पाया। और हमारे श्रीनिवास प्रभु बहुत
कुछ पुराने वो चीज़ें हैं बता सकते हैं। और कोई नहीं है पुराना, अभी याद नहीं आ रही कुछ चीज़ें। कोई अगर बीच बीच में कोई याद आ जाए उससे रिलेटेड चीज़ें बता। आप बोले, मेरे याद आएगा तो मैं बोल दूँ। हरे कृष्णा। माइक में हरे कृष्णा। पीछे तक सुनाई दे रहा है? थोड़ा पास में आ सकते हैं तो सुन पाएंगे। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है। श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज जी का 84 ना 84th व्यास पूजा जन्मोत्सव है। तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में बताया गया है कि वैष्णवेर गुणगान जीवेर होए त्राण सुनियाचे साधुर मुखे। इस प्रकार से है कि वैष्णवों का गुणगान करने से हमारा उद्धार होता है, उनके जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। So it's the duty of disciples or devotees to glorify Vaishnavas, and that frees us from this material bondage. और गुरु महाराज हमेशा ये भी बात बताते हैं कि साधु के चरण धूलि में जब तक अवगाहन नहीं करें, स्नान नहीं करें, तो हम भक्ति का भाव, भक्ति का शुरुआत भी नहीं जान सकते हैं। तो एक है अपना साधन भजन, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है साधु की सेवा। साधु की सेवा। और गुरु महाराज एक जगह ये भी बोल रहे हैं कि साधु संग। साधु संग का मतलब क्या है कि वो साधु के बारे में जानना कि उसने भगवान की सेवा के लिए कितना कष्ट किया, भगवान को खुश करने के लिए कितना कष्ट सहन करने को तैयार है वो। ये साधु का लक्षण है या साधु का संग। साधु को जान सकते हैं फिर हम। तो आज वो मौका है गुरु महाराज जी का थोड़ा गुणगान करने का। तो गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्यों में से अभी जो पृथ्वी पर जीवित हैं सबसे वरिष्ठ उम्र के अनुसार सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। शायद सबसे वरिष्ठ ही हों। वरिष्ठ हैं उम्र के हिसाब से 84 years old. So Guru Maharaj is 84 years old. He is the eldest Prabhupada's disciple on the planet right now. One of the eldest, or not, if not the eldest. और गुरु महाराज को बहुत सारे अनुभव हुए हैं प्रभुपाद जी की सेवा में, और कई बार बोले भी हैं आई एम ट्रेन्ड बाय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने मुझे ट्रेनिंग दिया है, और हमें पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहिए गुरु से। ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत कीमती भी है। So Guru Maharaj is personally trained by Prabhupada. He got opportunities to serve, cook for Prabhupada, and intimately talk with Prabhupada also. And it's very important to have personal training from the spiritual master. भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 11वां अध्याय के 54th श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि For one who has not gotten personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is impossible to even begin to understand Krishna. It's a very clear. If you open it, you can open now. Veda base, 11 chapters, verse 54, the purport. For one who has not gotten personal training under the bona fide spiritual master, it is impossible to even begin to understand Krishna. This is what Prabhupada is writing there. तो हिंदी में बताते हैं। प्रभुपाद जी 11वें
अध्याय के, भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54 श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति एक सदगुरु या फिर एक उत्तम अधिकारी गुरु के निर्देशन में व्यक्तिगत ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करता है, उसके लिए भगवान को समझ पाना, शुरुआत करना भी असंभव है। तो गुरु महाराज हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि महत पादो रजोभिषेका। तो एक बार एक शिष्य ने पूछा भी कि गुरु महाराज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पर्सनल अभिषेक करना पदरज में। तो गुरु महाराज ने बोला कि गुरु बोलेंगे लेफ्ट जाओ तो लेफ्ट जाओ, फिर गुरु डांटेंगे लेफ्ट नहीं राइट जाओ, तो फिर राइट जाना चाहिए। गुरु बोलेंगे सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो इस तरीके से बहुत विनम्र सेवक बनना और गुरु का अनुशासन स्वीकार करना, गुरु का शासन स्वीकार करना, यही उनके पदरज के अभिषेक करने में समान है। So what is the meaning, what is the deeper meaning of taking bath in the dust of the lotus feet of pure devotees? Somebody asked Guru Maharaj, and he answered that to become a menial servant of a sadhu, to obey his orders. If he says go left, then you go left. If he says go right, you go right. And if he says sit down, you sit down. If he says why you're sitting down, stand up. So you can't argue that you told me to sit down. Why are you telling me to stand up now? So that is called to take bath in the dust of the lotus feet of the pure devotees. To become very submissive and obedient to the pure devotee. और गुरु महाराज ने अपने बारे में बताया कि प्रभुपाद कभी कभी डांटते थे। एक बार एक इंसिडेंट्स था, प्रभुपाद बोले कि तुम बैठो, कमरे के बाहर बैठो, जब जरूरत पड़ेगा तुमको बुलाऊंगा अटेंडेंट की तरह। तो गुरु महाराज बैठे थे और वहाँ पे बुक शेल्फ में किताबें थी, तो भक्तिविनोद ठाकुर का कोई किताब लेके पढ़ने लग गए। तो प्रभुपाद आके देखे कि क्या कर रहे हो, और जब देखा कि भक्तिविनोद ठाकुर की किताब पढ़ रहे हैं तो गुरु महाराज को डांटे, बोले फर्स्ट रीड माई बुक्स, तुम पहले मेरे किताब पढ़ो, बाद में भक्तिविनोद ठाकुर किताब मत पढ़ो, रखो इसको वापस। तो गुरु महाराज ने रख दिया। फिर प्रभुपाद द्वारा अंदर गए, कुछ समय बाद फिर बाहर आए देखने के लिए, फिर से देखा कि गुरु महाराज फिर से वही बुक द्वारा पढ़ रहे हैं। फिर हट, मैं तुमको बोला था रखो इसको, गड़ो, गो आउट, बाहर जाओ। तो गुरु महाराज बाहर गए, तो बोला कम बैक, इधर आओ, बैठ जाओ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में ये बताया कि शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन करना। So I'm sure you've heard this incident when Guru Maharaj was sitting as an attendant and then he was reading a book, and Prabhupada came and asked, what book is this? And he said, Bhaktivinoda Thakur. Then Prabhupada said, no, you read my books. So after 10 minutes again Prabhupada came out, again Guru Maharaj is reading the same book. And then Prabhupada said, go, get out, go stand there. After some time, what are you doing? Come here, sit here, chant, read some book, don't sit. So Guru Maharaj said that in this way the Guru chastises, or the Guru sometimes gives varieties of services or immediately changes the service. So if we are submissive even in that situation, that means we are taking the dust of his lotus feet, smearing it all over our body. So back to that purport. आज भी पूछा ना क्वेश्चन से हम पूछा ये Yeah. Personally to us, I can't remember instruction given to someone else, so we're trying to follow. Whoever likes one thing, we should do something. Even if no one should force the 10, I heard from the disciples. That is also the same. We should come personal directly to the personality. In the beginning it's okay to follow the general instructions, but if we are serious, we should. Even today Guru Maharaj said in the Vyas Puja lecture, maybe you were serving busy, but many times Guru Maharaj has said that the disciples should again and again approach the Guru and ask for some personal instruction, for some service, so that for his whole life
that devotee has some instruction to follow. It should be personal, yes. Another time, another devotee also asked this. He had approached Guru Maharaj many times that please give me some service. But Guru Maharaj again said, okay, you continue the service, you do this service. So he asked Guru Maharaj, if we don't get personal service from Guru, then we are cheated. So what should we do? Then Guru Maharaj said, again, go and ask or pray to Krishna, cry to Krishna that I want to serve, please give me service. So our Guru Maharaj, he doesn't give service that easily. He'll observe you for a long time if you're submissive, if you're stick around. Many people don't even stick around. If you stick around and you are in good standing, then Guru Maharaj will. And according to your sincere desire also. Do you really want to serve or you just want to stick around? Enjoy the facilities. And after some time, Guru Maharaj will give. And the disciple's duty is to again and again approach. Again and again approach and ask for service. Even if you have already gotten some specific service, still you can ask, how else can I serve? What else can I do? What more can I do to serve? So that is the duty of the disciple. He should again and again, how can I serve you? Prabhupada said, I simply asked one question to my Guru, how can I serve you? How can I please you? तो माता जी का प्रश्न था कि क्या हमें व्यक्तिगत एक आदेश लेना चाहिए गुरु से या फिर जो किसी और को गुरु महाराज ने आदेश दिया उसी आदेश को हम पालन कर लें। तो मैंने बताया कि व्यक्तिगत आदेश लेना चाहिए, नहीं तो फिर गुरु बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। गुरु महाराज डायरेक्ट बोलते हैं, और अगर गुरु से आपको व्यक्तिगत आदेश प्राप्त नहीं हुआ या आपने पूछा ही नहीं, तो गुरु बनाने का क्या फ़ायदा है। गुरु का मतलब जिनसे आप गाइडेंस ले सकें। So Guru Maharaj also says that if you don't approach the Guru, or if you don't get a personal instruction from the Guru, then what is the use of making a relation with him? This is time, place, circumstances. It can differ also, but in our case, Guru Maharaj is giving us that opportunity, so we should take it. At least अभी बोल सकता हूँ? हाँ, शेयर कर लो, मैं तब तक वो ढूंढ लेता हूँ। अभी मैं जो देखा तो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियली नहीं, कई बार हम पढ़ के आ जाते हैं हाउ कैन आई सर्व यू, और करेंगे नहीं। तो अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है कि जो गुरु महाराज बोलेंगे वो करूँगा, और जस्ट आस्किंग फॉर सेक ऑफ आस्किंग। तो तब भी कुछ नहीं देते गुरु महाराज, एंटरटेन नहीं करते। जैसे किसी का आंसर देखिए, यू रीड प्रभुपाद बुक, एवरीथिंग इज देयर, और किसी को आंसर देते हैं। कहीं को बोल के भी फिर कैन आई से वन थिंग, यू प्रभुपाद सेज एवरीथिंग इन माय बुक, यू रीड हिज बुक, और फिर आंसर भी देंगे उसके बाद। लेकिन अभी मैं जो नोटिस किया, थोड़ा गुरु महाराज मोर ओपन हो गए हैं और ज़्यादा अभी कृपा देने लगे और सेवा भी देते हैं। चाहे नया हो पुराना हो, हाउ कैन आई सर्व यू, तो कुछ ना कुछ उसको ज़रूर बोलेंगे कि आप ये करो, बोलते हैं, अभी दे रहे सेवा। तो अगर हम थोड़ा सा भी, इवन जो आज डिसाइपल के बता रहे थे सुबह, आर्टिफिशियल, कंडीशनल और पार्शियल, तो उस वे में भी हम हैं ही। मैं तो हूँ, आपका तो आप लोग तो शरणागत हो सकते हैं भी, तो भी गुरु महाराज आर्टिफिशियल प्रार्थना भी सुन रहे हैं, उनका भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। और ज़्यादा कृपालु सर्वजीव कृपा बधे, जैसे भी पीछे की सारे इंसिडेंट आए तो हो रहे हैं, और फुल कृपा दे रहे हैं अभी, और ज़्यादा भगवत्ता दिखा रहे हैं जो मैं देख पाया। तो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन केवल पूछने के लिए नहीं तो कई बार गुरु महाराज बोलते भी हैं कि बार बार अगेन एंड अगेन आस्किंग सेम थिंग। जब तक फॉलो नहीं करेंगे नेक्स्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एंगेज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। गोपाल प्रभु यार वेट, try to glorify Guru Maharaj. Impromptu glorification of Guru Maharaj. Impromptu, just out of pure. जिसको जो स्मरण आ जाए इंसिडेंट के थ्रू, या जो भी बोलना चाह रहे, तो आप अगर आप चाहते हैं तो आइए। तो क्या बोलना है? कुछ भी गुरु महाराज का रिक्वेस्ट, गुणगान। Glorification of Guru Maharaj. I don't know. Guru Maharaj said today, na, Guru Maharaj is from Vaikuntha. How can I? लेकिन little loud.
Let me collect my thoughts. We know one thing, no? Especially those who are older devotees, those who came when we were very young, no? That we are what Guru Maharaj made us, no? All devotees who are here since long time, Trained by Guru Maharaj? we're trained by Guru Maharaj. We saw Guru Maharaj from the beginning of our spiritual life, and we don't know anything else, no? But one thing is, somebody was asking about a question, not personal. Guru Maharaj always responds in accordance to our enthusiasm to serve. Of course, Guru Maharaj will not let anybody go and burn himself in the fire. He will first see he has proper standards regarding our basic what we do, na? Mangalarti, rounds, listening lecture, eating prasadam. So, if we do that properly, then Guru Maharaj will give us some service which will get us free from the Maya. And one who's being in the service since long time, he can see how his previous identification has been overlapped by a new one, na? Ultimately, Guru Maharaj wants us to make us come to our Sarup. Our Sarup is to serve Krishna without any material motive, without any material aspiration. Guru Maharaj was saying today, now don't expect anything. Now sometimes we think we did this service, Guru Maharaj should or Krishna should respond to me in a particular way, na? But as long as we have the calculative, how you say calculative? Calculative, understand calculative? Huh? Isab, kitab, na? I am doing this, I should get this. So that mood, then we cannot get Guru Maharaj's real mercy, I think. So if Guru Maharaj is very simple. Guru Maharaj says, what is the meaning of Hare Krishna Maha Mantra? We all think that this is old story, but this is the real story, na? Oh Radha, Krishna, please engage me in your service, so I don't be in the service of Maya. So this will last forever. It's not that now I became a senior devotee, this Hare Krishna mantra is not for me. Everybody should be engaged in service, and this is the way to get out of the Maya. Otherwise, any moment, any of us, we are victim, we can become victim to sense gratification and forget service. So if we remember Guru Maharaj and try to do whatever he wants from us sincerely and have the desire to serve him with enthusiasm, I think he will respond beyond our calculation. And anybody who serves, Guru Maharaj responds. I think. Now everybody has this realization. प्रभु आओ ना, आपके पास भी बहुत कुछ है, टाइम है तो आ जाओ. So now mic is coming. Come. एक सीट बनाना चाहिए. हाँ? You can make one place where the speaker will sit, so it becomes more. एक कुर्सी लगा दें यहाँ पे. कैमरा में दिक्कत होता है. एक कुर्सी लगा दो और ऑडियंस और स्पीकर में थोड़ा क्लियरिटी भी हो जाएगा. तो गोलमाल है. ये रहा कुर्सी. तो बैठूं, चेयर में बैठूं. थोड़ा इधर लगा दो, लाइट डिस्टर्ब करो. इधर लगा दो. सब लोग मुड़ जाओ. Continue. So, anyways, Guru Maharaj wants us to become devotees, and if we allow him, he will make us devotee. If we don't allow him, then how he can make us devotee? So for that you have to be very simple-hearted, and those who are, now we are with Guru Maharaj since last 13 years. So
there has been a long journey and it will continue. But I remember I was reading from one Prabhupada's disciple. He said, Prabhupada trained us in many ways. He gave us many instructions and he trained us in many ways and he told us many things to do. But he could never train us to live without him. So, Guru Maharaj is here with us now, just as Prabhupada was with his disciples. But any moment Guru Maharaj can go. Of course, child cannot expect that his Guru will go. But until then, you should be very serious. Because after Guru goes, it's very difficult. Now whatever we are doing, we are trying to show Guru Maharaj. Now Guru Maharaj smiles a bit, for us it's a big satisfaction. Now we're struggling for 3-4 months, 6 months, whatever, then Guru Maharaj gives a little smile. Then you feel very recharged. That is what we live for. Those who are living for this, of course, not all, but most of us, we are living for making Guru Maharaj happy. Guru Maharaj gets a little smile from us. But once Guru Maharaj will not be there, it will be very difficult. So before that we have to learn to, Guru Maharaj said, conditional, partial, what's the other one? Artificial. So that should be given up. We should try to come fully surrendered to Guru Maharaj. So Guru Maharaj talks to us within. The real thing is when you connect to Guru's desire. So I don't know, it's becoming like a lecture. I don't want to give so much lecture because what I have not so much realized. But beginning you start glorification of Guru Maharaj, some Leela, some pastime. So that's what I'm saying. Come inside one question and So Guru Maharaj is just following Prabhupada, that's how I know. Today he was telling Srila Swami that it's very good that you're not glorifying yourself and you're glorifying Prabhupada and the previous acharyas. So Guru Maharaj has always been like that. He never wanted to become big. That is the sign of a devotee. He never wants to become big. In a spiritual society, we always have this running, I want to become so many followers, I want to have so many buildings, I want to have so much money. But Guru Maharaj was not into this, never. Guru Maharaj became a guru, he told me, I became a guru, they shoved it up my throat, I didn't want to become. I'm forced to become, I'm becoming, otherwise I didn't want to become. So Guru Maharaj was always really small, wanted to remain in small position because the more usually we outside prakat, क्या बोलते हैं, manifest. That means Bhakti Vinod Thakur says, inside you are not that full. Not so much you want to show outside, that means inside there is you are not sure of your inside. So Guru Maharaj always encourages us to, I remember we were in 2013 or something in Bali. And so many devotees coming, Guru Maharaj, I did this thing, I distributed so many books, I did this, I did that, I did this. So Guru Maharaj is telling, very good, very, very good, very, 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 very good, very, very best, good, good, everybody good, best. Then Guru Maharaj, we went upstairs, Guru Maharaj said, distributing books is external, coming to Mangalarti, that is external, everything is external. And then I'm like, so what we do now, Guru Maharaj, everything is external, so now what to do? So then Guru Maharaj, I remember, pushed me to the wall, like strongly pushed me, and he said, Bilma Mangal Thakur, when he understood that he had to pluck his eyes, to get Krishna, he plucked his eyes. Actually, these 5 senses is your whole problem. These 5 senses we all have, that is our problem. So are you ready to pluck your eyes, Gopal? I remember pushing me to the wall. I was so small that time, 2013, I was just 20 years something old. Now I was a small boy.
And I'm like, chup chap, I don't know what to say. But then the Guru Maharaj says, see, you're not ready. So going back to Godhead is not so easy. Guru Maharaj always told us that. Now, Guru Maharaj once told me in Bangladesh, 2011, Gopal, do you want to go back to Godhead? I said, yes. He said, suppose there is a tiger and there is a snake, a crocodile, and I tell you jump. Will you jump? I said, I didn't say anything. But then he said, you have to jump, but you have to have faith there is a net. There is a net and Krishna will protect you when you jump. So when we come to surrender, it's something like that. It's not easy. A devotee should never feel, at least Guru Maharaj will never let you feel, if you go near to him. Nah? Sometimes we don't want to take headache, so we stay far. No, we stay far from Guru Maharaj, so Guru Maharaj doesn't hammer us or give us an instruction or something we don't want to do. Now we have the tendency, but if you really want to go back to Godhead, you have to always keep proximity. Now Gaur Govinda Maharaj says, disciple is one who always wants to be chastised, always one who wants his position to be challenged. Now we think, I did this much, I am okay. The moment you think you're okay, devotee means he is not okay. So if you stay with Guru Maharaj, Guru Maharaj will never let you feel that you are in a... Guru Maharaj will always make you feel you are lacking. That is a real Guru, that's why he is called heavy. So this is very important for spiritual life. Otherwise we get stuck in the external. The bagadori, how you say, the running, running here, running there, doing this, doing that, but not internal. And internal is very important. That is Brahmin. Now Guru Maharaj says, working hard, elephant can work hard. But that's not Brahmin. Brahmin means one who is thoughtful, who is always thinking how to improve in bhakti. And we have a long way to go, no doubt. Guru Maharaj told me now in Jaipur we have so many layers of false ego covering us. Now we think this is a layer, we have so many layers up to soul. From what we are now, we think we are now to soul. So many peels, banana peels, no? 1, 2, 3, how many we don't know. So hope against hope. Hope against hope. How you say in Hindi, hope against hope? I mean, there is no hope, but still we hope. So this is the life of a devotee. It's called Asha Bandha actually. There is a Sanskrit term, Asha Bandha. So one who is serious, that is all he has. And then Guru Maharaj sometimes, Guru Maharaj is the perfect doctor, I think, na? We all believe. Guru Maharaj sometimes will, but always according to our enthusiasm to serve. No, it's just like I was watching one Prabhupada memories, maybe Hansadutta. He was telling, in the beginning Prabhupada used to engage everybody. Later he was not that available, no? Like now devotees say Guru Maharaj is not available. Like those who came in the beginning, Guru Maharaj was very much available. Now devotees say, no, Guru Maharaj is not that much available. That's not true at all. If you are enthusiastic, if you want to serve, then Guru Maharaj is very available. But if you are not enthusiastic to serve, you don't want to take headache, which is most of us, we don't want to take headache. Now we want easy going. Then Guru Maharaj also keeps, okay, as much as he's doing, let him do. So that's why our sadhana is very important. Guru Maharaj always focus, everybody knows sadhana means what? You have to pray from the core of your heart, oh Krishna or Radharani, please, 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 let me serve you. So I don't serve Maya. This is not only for new devotees, no? This is for all devotees, old, new, middle, all. As long as we do this, we will be connected with Guru Maharaj and our spiritual life will go forward. Otherwise, it's a struggle. No? Old devotee, new devotee, everybody is struggling only because we don't want to serve.
The moment you serve, all your problems finish. Just like Guru Maharaj. Guru Maharaj in the early days, sometimes low spirit, no? Everybody faces high spirit, low spirit. So Guru Maharaj, what Guru Maharaj do? Anybody knows? What was the solution? What was the solution when Guru Maharaj was feeling low spirit? Nobody knows, huh? There was one devotee, his name was Trivuvanatha. English, Irish devotee, very nice devotee, very Prabhupada loved him. So Subhag means Guru Maharaj, means come, let's go do Nagar Sankirtan. So Nagar Sankirtan, before and after, different person. So devotees should always be enthusiastic to serve. If you are not serving, you cannot progress in spiritual life. And if you don't progress, you won't feel happy. If you won't feel happy, one day you will have to say bye-bye to the devotee association, and that is the saddest moment for the soul. So always, Guru Maharaj says, eager to serve, at least at heart, At least at heart we should be eager to serve, and then Guru Maharaj's mercy is there. So no, now I am not remembering so many things. But that's what Guru Maharaj taught us. I remember once in Vrindavan, Guru Maharaj was in Radhakund maybe, so I'm thinking, okay, I'll finish my rounds really early. I woke up at 1 o'clock, 3 o'clock finish round, take bath, Mangalarti, go to Radhakund. 6 o'clock I reached Guru Maharaj's room. So Gopal, you chanting Hare Krishna? Yeah. Finish your rounds? Yes, Guru Maharaj finished. So what do you think when you chant? I said, Guru Maharaj, I ask for service. I ask, oh Krishna, engage me in your service, Radha. Say, okay, how much service did you do today? So then chup, because no service. So Guru Maharaj is encouraging us to do service. One who does service, Guru Maharaj will definitely appreciate him. Guru Maharaj appreciates, Krishna appreciates, we progress. But if we are lazy into service, not that joke, how many brahmacharis required to change a bulb? How many? To change a light bulb, how many brahmacharis do you require? One. Huh? One. How many brahmachari require? कितना brahmachari की जरूरत है एक light bulb को change करने के लिए? हाँ? नहीं बाबू, एक भी नहीं. It's not my service. एक भी नहीं, it's not my service. Why should I do? So as long as we are, Guru Maharaj was telling in class, the service should not be done as a duty. It's my duty, I did my duty, it's enough. It should be done with heart. So that's what Guru Maharaj is training us. I don't know, so many stories we can say about Guru Maharaj, but the point is this, that you have to serve. Now, this other Maharaj was telling, he left now. What is his name? Sannyasi Maharaj. Seva, Seva, Seva. But of course, not just running seva like elephant, it has to be balanced with insight. That is why we do sadhana, that is why we listen to Guru Maharaj's class. So it's not just running, and it's also not just going to Radhakund and doing 64 rounds. It's a balance of both. And very naturally advance in spiritual life. And then Guru Maharaj will be happy, and then Guru Maharaj will reveal himself. Guru Maharaj will show you who he is. Now just like now in Sadhu Sang, Guru Maharaj, we see him, he's a picture, he's like Guru, Jai Gurudev. But we don't know Guru Maharaj's heart, how he is, how he's like a person, how he thinks, how he sees. The Guru Maharaj is a vyakti, like a person. So when you get to know Guru Maharaj in that way, then your heart, you can surrender deeper, to deeper levels. Otherwise, so many came, so many went. Unless you find satisfaction at heart, unless you connect with Guru Maharaj as a person,
It's very difficult. One place Guru Maharaj was telling, the Prabhupada's grand disciples, means not disciples, means disciple, like us. So they were going to glorify Prabhupada. So Guru Maharaj said, what are they going to glorify Prabhupada? They were never with him. How are they going to glorify him? So it's important to have a personal relationship with your Guru Maharaj. It's very important. It's very must. And if you think that you can make it without this personal relation, it's very difficult. Well, we have a quote on the Yeah. same point. Just start from the top. Exactly the same point. Yes, Karim is coming to mind. One cannot understand Krishna by mental speculation. For one who does not take personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is impossible to even begin to understand Krishna. The word "to" is specifically used here to indicate that no other process can be used or can be recommended or can be successful in understanding Krishna. Yeah, Prabhupada is saying the same thing. Because it's the way it is. Chaitanya Chaitamrita Prabhupada says your relationship with your spiritual master, that is your relationship with Krishna. It equates. Both are together. So it is best to be in good terms with your spiritual master, and for that you have to be simple-hearted. For one who has politics in his heart, for one who has personal interest in his heart, for one who has not come here to do pure devotion, for him association of the pure devotee becomes very heavy, intolerable. But for one who is very simple at heart, who has come here for the right purpose, who has nothing to hide, even though he might have millions of imperfections, for him association with the spiritual master will be very sweet. And this sweetness is the only thing that can take us out from Maya. Otherwise, attachment is very deeply rooted. So, what else? Ask somebody else. Anybody wants to some question regarding something? Then somebody else can talk. Like Pitambar Prabhu, he might have so many talks. No? With Guru Maharaj. Or Abhiram Swami. और क्या हो गया? पितामह प्रभु थोड़ा बात करोगे? हाँ? How can be simple? How be simple? How to be simple? देखो. How to be simple? You have to be simple. There's no. It's not question. You have to. किसी ने पूछा Guru Maharaj, how can I love you? No, if your father has to teach son how to love him, then difficult. So you have to become simple. Obviously, by good association. You associate with politician, you become politician. You associate with devotee, you become devotee. You associate with Gurukuli, you become Gurukuli. Like that. No? So all this is knowledge. Now we have the knowledge. Knowledge we have been hearing so many years. But beyond knowledge is, what is the other one? Vigyan. I am doing the knowledge. I mean, sir, I am practicing knowledge. And that practice can only be an association of similarly mind devotees. No? Jai Krishna, you want to say something about Guru Maharaj? I don't know, I didn't. Pitambu saying no. He doesn't feel inspired. Jai Krishna, you want to say something? Guru Maharaj is glorifying you again and again. Come.
I'm just coming. Oh. Just coming 1 minute. लगा दो आगे ले आता है क्या लगा दो लगा देगा देखो It's okay, I'll just hold it. It's not so long. No, just how do you just... Yeah. Okay. I don't know. Just I remember a couple years ago I had a chance. Ramaj was very kind and was allowing me to do a lot of cooking service, and I don't know. But actually, at that time, Guru Maharaj was getting some surgery done on his eyes, and also at the same time, one devotee wasn't feeling so well, and it was immediately after the surgery, like Guru Maharaj had surgery, and then suddenly I couldn't find anyone else there, so I just became a little worried. It was late, not so late, so I just opened Guru Maharaj's door to see what he was doing and seeing if he was okay. Like, I just wanted to make sure everything was okay. So I peeked in, and when I peeked in, I saw Guru Maharaj was laying there, the lights were dimmed, no one was in the room. And then I just peeked in and I saw Guru Maharaj was sleeping. So I was going to shut the door very slowly, and then Guru Maharaj's head popped up and said, "Who is it?" And I said, "It's Jai Krishna." So, come. So then I just sat there, and then actually Lali, she was having some problem, some issue, and she was supposed to go see some doctor. So the first thing Guru Maharaj asked me was, "How is she?" Guru Maharaj is sitting there with a huge patch on his eye, and the first thing he asked me is she okay? So at that moment I saw how much Guru Maharaj really cares for us. That even in a situation like that, he could possibly go blind, but he's thinking about how we are. I just want to share that. It was very nice. I can't think of anything more. प्रभु कुछ चीज़ें बताइए। गुरु महाराज को गुणगान करो। हरे कृष्णा। एक काम करना इसको, अगर ये गिरे तो आप हाथ में पकड़ लो, इसको हाथ में पकड़ लो, इसको हाथ में, माइक छोटा माइक है, हाथ में पकड़ लो। लेट्स गो। हरे कृष्णा।
मध्यनतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. Hare Krishna. So I was not prepared. So in the year 2013, I think 13 or 14, so when I met Guru Maharaj, so in the initial days I was very new, so whenever I was thinking to ask anything to Guru Maharaj regarding spiritual journey, how to serve Guru Maharaj, so how to progress, and whatever problems, how to remove that obstacles. So I was having so many things wandering in the mind. So when Guru Maharaj, many times Guru Maharaj used to come to Bangalore those days. So I usually hesitate to express my things, and especially in front of Guru Maharaj, I was very, nervous, feel to, become nervous and these things. But I was having so many things to ask. But it is said that, right, so we have to express ourselves. Though Guru Maharaj knows everything, our heart. So the moment I try to ask something, maybe few words, Guru Maharaj immediately used to catch me, and he tell everything. So whatever I was having in my mind, everything, more than that. So, and sometimes it happens, this, many of you might be having that realizations or understandings. Though Guru Maharaj is very near and we are sitting, Guru Maharaj generally tells in low voice, the person to whom it has to, Guru Maharaj make it understand to him particularly. The other person, he could not catch those words, and he sometimes he may not hear also properly. But that particular person, used to get those all things. This also, this is very special. Very special. Guru Maharaj is very special because he is very pure, right? So, especially I am not on that plane, So there are so many incidents like that. Yeah, that's it, Prabhu. Thank you very much for giving me opportunity to tell few things. Hare Krishna. Again. I don't know, I was just remembering that story. So one time in Mayapur, during the it was one Chaturmas, Guru Maharaj was staying in Mayapur, I think during COVID, and
the devotees in Mayapur, they prepare breakfast and lunch and dinner for Sharam for Guru Maharaj, and they scheduled me for one lunchtime. So I was a little nervous, but at my home I was preparing whatever I could, and then I don't have like the proper tiffins, so I made the preparations, and then a couple times Guru Maharaj had told me to make some juice for him that was good for his heart. Beetroot juice is good for heart, Guru Maharaj said many times. So I was feeling very enthusiastic because I found one nice recipe. So I was making it, and then it came like, they either said I had to have the prasadam delivered at like 1:30. So I was like, oh, it got closer to the time. So I packed everything up and then I got on my cycle. And at that time, the rain, during the rainy season in Mayapur, is coming down very heavy. So I put one raincoat on with a hood. And I took off on my cycle and I had two tiffins. One like stacking one, and you pull the lever up like that and it hooks. And then another one like you carry milk in, just like a handle, and it swings and you put a top on it. So I put the juice inside the swinging handle one, and I'm going on my cycle and the rain is coming down and blocking my vision. So I can only see from here down, and I have two tiffins in my left hand like this. And then I came up to the intersection at Govinda's, and one Toto was there, and I swerved, and the tiffin with the juice spilled everywhere. So I became a little upset. The juice was everywhere, and I said, there's nothing I can do. So I carried on. But then I kept going, and I made it to the ashram, and I went upstairs to knock on the door. I knocked on the door, and when they opened the door, they saw it was me, and I showed the tiffin. So then I kind of went in with my head feeling ashamed. And as soon as I walked in, I saw Guru Maharaj, and Guru Maharaj said, "Oh, nice juice." So I became very shocked. I didn't know how to react. So, Guru Maharaj is always watching. Though I don't know, I thought it was how Guru Maharaj is knowing like this. So I thought I'd share this. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो सभी को गुरु महाराज के कुछ गुणगान करना चाहिए आज, और प्रयास करें कि गुरु महाराज के गुणगान करें, अपने स्टोरीज़ ना बताएं, गुरु महाराज की स्टोरीज़ बताएं। तो एक दो स्टोरीज़ मैं शेयर करूंगा। अभी इंग्लिश में हो गया काफ़ी, थोड़ा हिंदी में बताऊंगा। उसके बाद पीताम्बर प्रभु, आप भी गुरु महाराज का थोड़ा गुणगान करिए, आज बहुत शुभ दिन है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि साधु संग का मतलब है कि साधु भगवान के सेवा के लिए कितना कष्ट करते हैं, उसको जानना, सुनना। तो एक बार प्रभुपाद गुरु महाराज को बोले थे कि आप ईस्ट पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान था पहले, ईस्ट पाकिस्तान, तो आप उधर जाके प्रचार कीजिए। तो गुरु महाराज हाँ भी नहीं बोले, लेकिन मतलब ना भी नहीं बोले, लेकिन हाँ भी नहीं बोले। और उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था और बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान में मिल भी जाए, और वो भी एक हिंदू जो प्रचार करने आया है, उसको तुरंत परेशान करते, मार भी सकते हैं। तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। फिर प्रभुपाद बाद में पूछे, कावर्ड, डरपोक, तुम डरते हो क्या? मेरे शिष्य वहाँ पे नहीं हैं, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे वो? तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, लेकिन इस बात को हृदय में लिया
कि प्रभुपाद चाहते थे मैं बांग्लादेश में प्रचार करूं। और उसके बाद जब भी मौका मिला, जब युद्ध ख़त्म हुआ शायद 80s में, 1984, 85 जो भी इन सालों में, गुरु महाराज कई बार बांग्लादेश गए, वो भी प्लेन ड्रेस पहन के, पैंट शर्ट पहन के, टोपी पहन के। और गुरु महाराज बताए कि वहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, इस्कॉन का कोई टेम्पल नहीं था, जब शुरुआत था प्रचार का, तो किसी गांव में या किसी जगह जाके पहले पूछते थे कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है, और ब्राह्मण का घर पता करके वहाँ पर रुकते थे रात को कि हम प्रचार करने आए हैं, कृपया हमें यहाँ रुकने दीजिए। तो 3-4 दिन के लिए गांव में रुकते थे, और रोज़ रात को पंडाल प्रोग्राम अरेंज होता था, लोकल भक्त लोग करते थे, और रात भर बैठना पड़ता था। खासकर जैसे बंगाल में, भारत में भी अगर आप कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जब प्रीचिंग सेंटर करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, आप अगर 6 बजे का टाइम दोगे तो 8 बजे से पहले कुछ नहीं होने वाला। 8, 8:30, 9, बंगाल में और भी ज़्यादा, बांग्लादेश में। तो वहाँ पर माताएं जो हैं अपने घर के काम होते हैं, बच्चे हैं उनको सुलाना है, बहुत सारे काम हैं, सब कुछ कर आके तब फ्री होते हैं। तो बांग्लादेश में प्रोग्राम का मतलब था रात को 8 बजे से कीर्तन स्टार्ट होता था, 8 से 10 बजे तक। उसके बाद थोड़ा स्पीकर बजता है तो लोग आते थे कि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है। फिर उसके बाद 1, 2, रात के 2 या 3 बजे तक बैठना पड़ता था। और इस्कॉन का टेक्निक था कि विदेशी भक्तों को ले जाता, विदेशी भक्तों को देखने के लिए सब गांव के लोग आके देखते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं आंखें लाल हो जाती थी, और रात को 2 बज गए, 3 बज गए, कीर्तन हो रहा है, बीच बीच में भजन कीर्तन हो रहा है, फिर कोई कुछ कथा कर रहे हैं, कोई विदेशियों को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ऐसे करते करते 3 बजे तक बैठना पड़ता था। तो गुरु महाराज बैठना पड़ता था। आप सोचिए, जो गुरु महाराज 8 बजे तक सो जाते थे और सुबह 12-1 बजे उठ के जप करते हैं, तो गुरु महाराज कितना सैक्रिफाइस किए, 2 बजे 3 बजे तक बैठे हैं प्रोग्राम करने। और फिर किताब ग्रंथ वितरण करना। तो इस प्रकार से शुरू में प्रोग्राम्स करते थे। और फिर एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। सो आई जस्ट ब्रीफली टेल द इंग्लिश version. So Prabhupada asked Guru Maharaj to preach in Bangladesh. Initially, Guru Maharaj was very afraid, but later on, whenever he got the opportunity, he went to Bangladesh and he preached. And preaching in Bangladesh then meant that you find in a village, you find a Brahmana house. Any Brahman's house, then they'll allow you to stay, and you can cook your food, cook your prasad, and then distribute books and do a pandal program. And in Bangladesh, pandal program means from 8 o'clock at night till 2 or 3 o'clock in the morning, because people generally they come late. बंद हो गया? So Guru Maharaj used to sit till 2 or 3 o'clock in the morning. His eyes would become red sometimes by sitting up all night. So these are the difficulties Guru Maharaj faced. And once Guru Maharaj's passport had expired, so I'll tell the Hindi version then English. तो गुरु महाराज ने अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया था जो बॉर्डर डिपार्टमेंट को, और उन्होंने बदले में एक स्लिप दिया। वो ऑलरेडी चार्ज है दूसरा वाला, ये कैमरा दूसरा कैमरा कर नहीं पाएगा, तो छोड़ दो उसको, स्टॉप कर दे स्ट्रीम को, स्टॉप।